In habitat you see some animals living in water and some animals are living on the land. These animals also breathe, but in water they breathe with other organs and on the land they breathe with other organs. So in this video we will see the organ for breathing in animals. Breathing in animals. In this module, you will learn how different types of animals breathe. Sid has returned home after playing with his friends. He is breathing so heavily. It looks like he ran home immediately after playing. For breathing, as you already know, we all need air. Air enters inside our body through the nose. It then reaches the lungs with the help of windpipe that connects the nose to the lungs. Inside the lungs, there are numerous blood vessels. Through these blood vessels, gaseous exchange takes place between the lungs and blood. The oxygen moves from the lungs into the blood, while the blood releases carbon dioxide into the lungs. This carbon dioxide then moves from the lungs to the nose and then out of the body. Like human beings, all mammals such as cat, cow, and dog breathe with the help of their lungs. Apart from mammals, reptiles and birds also breathe through their lungs. However, there are a number of animals that do not have lungs. They have some other organ for breathing. Let us look at the breathing organs in aquatic animals. Look at a fish. Since a fish lives in water, it has to take in oxygen that is dissolved in water. It has special organs called gills that help it to do that. Water enters inside the body of the fish through its mouth. When this water passes through the gills, the exchange of gas takes place between gills and water. The gills take in oxygen dissolved in water and release carbon dioxide. Like fish, tadpoles, prawns, and oysters also breathe through gills. Now, let's look at the breathing organ of an amphibian. A frog is an amphibian. It lives both on land and in water. On land, it breathes through lungs, whereas in water, it breathes through its skin. Next, let us learn about breathing organs of insects. Insects have small holes on the sides of their body called spiracles. These spiracles are connected to a network of air tubes that reach to all the parts of their body. Air enters inside an insect's body through the spiracles and reaches to all parts of the body with the help of this network. Different body parts take in this oxygen and release carbon dioxide that moves out of the body through the same path. Now, there are some other animals that do not have special body parts for breathing. Instead, they breathe through their skin. For example, an earthworm. Earthworms absorb oxygen and release carbon dioxide directly through their thin and moist skin. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो आपने इसमें देखा कि किस तरह से एक्वाटिक एनिमल्स अपने लंग्स, गिल्स से सांस लेते हैं. जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, उस ऑक्सीजन, वाटर में से ऑक्सीजन वो लोग अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और जो हम मैमल्स, एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वो अपने लंग से सांस लेते हैं. इसी तरह हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, तो वो लोग अपने स्पाइरेकल से सांस लेते हैं. तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं. एम्फीबियंस के बारे में हमने कल पढ़ा था. तो एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जब
लैंड पे रहते हैं तब अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और जब वो पानी में जाते हैं तो अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। Animals move from one place to another in search of food, shelter, and also to escape from their enemies. But different animals move with different body parts. So in this video, we will see the movement of animals. स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स इन एनिमल। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट यानी चलना। तो फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स, जनरली हम ह्यूमन बींग्स अपने 2 पैर से चलते हैं, कुछ एनिमल्स अपने 4 लेग्स से चलते हैं, कुछ एनिमल्स अपने पेट के बल सरक के चलते हैं, कुछ एनिमल्स जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपने फिंग्स के थ्रू स्विम कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फ्लिपर्स की मदद से चल सकते हैं। सील और पेंगुइन में आपने देखा उनके वेब्ड फीट होते हैं।
फिर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिसको फ्लाइटलेस बर्ड बोलता है, जैसे कि एमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन। ये बर्ड है, फिर भी उड़ नहीं सकते क्योंकि अपनी हैवी बॉडी के कारण वो लोग चलते हैं। इसको फ्लाइटलेस बर्ड्स भी बोलते हैं। माइग्रेशन यानी ओरिजिनली अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। तो हर साल कई बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एवॉइड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। ओरिजिनल वो जिस प्लेस पे रहते हैं विंटर की सीज़न में या तो समर की सीज़न में, वहीं उस प्लेस का अगर हार्श एनवायरनमेंट होता है तो वो थोड़े टाइम के लिए दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन नॉर्मल हो जाती है वो एनिमल्स और बर्ड्स वापस अपनी प्लेस पे आ जाते हैं। तो जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने कमाने के लिए और अपने ज़िंदा सर्वाइव करने के लिए जाते हैं, उसी तरह माइग्रेट बर्ड्स में और एनिमल्स में भी ये माइग्रेशन होता है। तो आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन इन birds and animals. Migration. The periodic movements of birds from one place to another and back to their original homes are called bird migration. Many birds fly long distances in spring season. They build and raise their young in a new home and then return when the climate becomes warm. Birds migrate mainly to avoid shorter days in very cold regions where food also becomes scarce in winter. When the conditions become favorable, they return home. The Arctic tern is the most interesting migratory bird. It journeys twice a year from pole to pole, a round-trip flight of more than 350,000 kilometers. Locusts are harmful migratory insects. Swarms of locusts settle on standing crops and destroy them. Many kinds of butterflies also migrate. The monarch butterflies fly from Canada all the way to Mexico. Birds are not the only animals that migrate. There are fish like the Indian shad, which migrate from the sea to the rivers to lay eggs. Eels, the snake-like fish which live in fresh water, go to the seas to lay eggs. The young ones hatch and grow in the seas. Later, they return to the rivers